गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गगनयान मिशन। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि गगनयान के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे, क्योंकि इंडिया और यूएस ने जॉइंट मिशन अनाउंस किया है कि नेक्स्ट ईयर उनको जो है गगनयान मिशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको आईएसएस पर भेजा जाएगा। तो आईएसएस क्या है? एक लार्ज स्पेसक्राफ्ट है जो लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है, और जो है स्पेसक्राफ्ट है जो लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है, और यहाँ पर जो है माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स द्वारा जाकर, बेसिकली जो है कि कैसे स्पेस में ऑपरेट किया जा सकता है। और इसको नासा ने, रशिया ने, यूएस ने, रशिया ने, जापान, यूरोप और कनाडा ने जो है इसको मिलकर जो है वो बनाया था। जो है 5 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ ने जुलाई 2022 में रशिया ने अनाउंस किया कि वो आईएसएस को छोड़ देंगे आफ्टर 2024, क्योंकि वो अपना खुद का जो है वो स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। 1998 से जो है आईएसएस जो है वो बनाया गया है। अर्थ को जो ये 430 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से ऑर्बिट कर रहा है, और ये अर्थ को हर 93 मिनट्स में रफली ऑर्बिट कर लेता है। और अगर हम देखें गगनयान मिशन, तो ये जो है इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी का एक मिशन है। 3 क्रू मेंबर्स भेजे जाएंगे 400 किलोमीटर जो है वो स्पेस में 3 दिन के मिशन के लिए। और इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का ही ये मिशन है, जो कि 2007 में इनिशिएट किया गया था। GSLV MK3 रॉकेट जो है वो उनको लेकर जाएगा, जो कि इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है इसका। स्पेस एजेंसी ने जो है टेस्ट व्हीकल्स जो हैं वो शुरू कर दिए हैं मिड जो है क्रू एस्केप सिस्टम्स मिड फ्लाइट के लिए। जो है 2 और टेस्ट व्हीकल मिशंस भी जो हैं वो प्लान किए गए हैं कि जब वो अनमैन्ड फ्लाइट भेजी जाए उससे पहले और उनको थोड़ा जो है टारगेट्स को जो है एस्ट्रोनॉट्स जो है उनको अश्योरेंस मिल जाए। ठीक है, वो भी जो है उनको भी जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। ऊपर से टेस्ट जो व्हीकल है जो GSLV MK3, उसको भी जो है ऑलरेडी आपको याद होगा कि सैटेलाइट्स लॉन्च करने में भी जो है उसको यूज़ किया जा रहा है। फिर गगनयान मिशन जो है वो 2022 में लॉन्च होना था एक्चुअली, लेकिन जो है ड्यू टू कोविड उसको जो है वो पुश कर दिया गया। अगर सब कुछ सही रहा तो 2024 में, और अगर नहीं तो 2025 में ये मिशन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वैगनर ग्रुप। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया में अभी रिसेंटली एक आर्म्ड म्यूटिनी हुई थी वैगनर ग्रुप मर्सनरी की। तो वैगनर ग्रुप के ट्रूप्स ने जो है रोस्टोव ऑन डॉन, ये रीजन जो है जो कि जहाँ पर रशियन आर्मी का एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, वह उसको जो है कैप्चर कर लिया था। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला था कि वो इस आर्म्ड म्यूटिनी को क्रश कर देंगे। तो रोस्टोव ऑन डॉन ये एक लार्जेस्ट सिटी है साउथ वेस्टर्न रशिया की, ईस्टर्न यूक्रेन को जो है बॉर्डर करती है। और वैगनर ग्रुप क्या है? वैगनर ग्रुप ने जो है क्यों रशियन मिलिट्री के साथ जो है ऐसा किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि रशियन ट्रूप्स ने उनके ऊपर रॉकेट अटैक किया था। रशियन आर्मी ऑफिसर्स जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन को जो है वो झूठ बोल रहे हैं कि जो है कि किस लेवल की वॉर चल रही है यूक्रेन में। और वो जो है उनका ये कहना है वैगनर ग्रुप का कि जो है ये मैटर जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री की वजह से ऐसा हो रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री और उसके ऑफिशियल्स की वजह से ऐसा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने जो है वो रिटेलिएशन में रोस्टोव ऑन डॉन में मार्च किया था। अब इसके रेमिफिकेशंस ये हैं कि इससे क्वेश्चन उठ रहे हैं रशियन आर्मी के ऊपर कि उनके ऊपर ही एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, और वो एक उनके हेडक्वार्टर जो है रशियन आर्मी का उसको ही जो है कब्जे में ले लेता है। तो इससे जो है रशिया की एबिलिटी टू वेज वॉर इन यूक्रेन, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब वैगनर ग्रुप क्या है? PM जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर वैगनर रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, 2014 में इसको बनाया गया था। ये रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट जो हैं डॉनबास रीजन ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन में उनके साथ लड़ रहे थे उस टाइम पर। अब उसके बाद धीरे धीरे ये इतना फैल चुके हैं कि पूरे अफ्रीका में ये जो है काम कर रहे हैं। फिर 10,000 से करीब जो है वो इस टाइम पर वैगनर ग्रुप मेंबर्स काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केदारनाथ टेम्पल, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बिठाई है, क्योंकि लगभग 125 करोड़ का कोई स्कैम हुआ है वहाँ पर।
गोल्ड प्लेटिंग ऑफ सेंक्टम सेक्टोरम के लिए जो टेम्पल की है। केदारनाथ टेम्पल हिंदू टेम्पल है, शिवा को डेडिकेटेड है, और ये 3584 मीटर्स की हाइट पर है गढ़वाल हिमालयाज़ में, मंदाकिनी रिवर के पास। पांडव्स जो है उन्होंने इसको केदारनाथ टेम्पल को बनाया था, लेकिन इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया आदि शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही एक्सक्यूजिट है। स्टोन स्लैब जो है इंटरलॉक किए गए हैं आयरन क्लैंप्स का यूज़ करते हुए, कोई मोटर यूज़ नहीं किया गया है। गर्भगृह है जो है, और मंडप भी है यहाँ पर। अब ये जो है छोटा चार धाम यात्रा का ही पार्ट है। छोटा चार धाम में क्या आते हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। अब ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स भी है, तो टोटल जो 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं उनमें से एक है केदारनाथ। तो टोटल जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री का क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में नहीं होंगे। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि जो प्राइमरी फोकस होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ होता है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि बार बार जो है डिसेबिलिटी पे जो है डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक चेंज नहीं होता है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी भी जो है वो उनकी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ बहुत जो है वो अलग अलग होती हैं। रिस्पोंडेंट्स जो है तो होते हैं सर्वे में, उनको पता नहीं होता है उसके बारे में कि कौन सी डिसेबिलिटी है उनको स्पेसिफिकली। लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के इस रिस्पॉन्स को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब हम देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता क्या है। ये रिलायबल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, मोर्टेलिटी और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इसको जो है वो कंडक्ट करती है। जो इसकी डेजिग्नेटेड एजेंसी है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई, जो कि कंडक्ट करती है सर्वे। फंडिंग इसको मिलती है यूएस एड से और यूनिसेफ से गवर्नमेंट को, ताकि ये जो है वो सर्वे कंडक्ट किया जा सके। अब ये जितने भी सर्वे कंडक्ट किए गए हैं उनकी टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जोहा राइस, एनवायरनमेंट के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली साइंटिस्ट जो हैं IASST, उन्होंने जो है न्यूट्रोस्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं जोहा राइस की। जोहा राइस एक इंडिजिनस राइस वैरायटी है असम की। कोला जोहा, केतकी जोहा, बोकुल जोहा, कुंकुनी जोहा, ये इसकी कुछ मेजर वैरायटीज़ हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और फिनोलिक्स होते हैं। GI टैग इसको मिला हुआ है, और इसमें ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको देखने को मिलेंगे। इससे डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों का जो है अगेंस्ट ये प्रिवेंशन देता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेलियोपोलिस मेमोरियल, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने जो है हेलियोपोलिस मेमोरियल पर विज़िट की है, और ये लार्जर हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेट्री का ही पार्ट है, जो कि इंडियन सोल्जर्स जो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है इजिप्ट और पैलेस्टीन में कैंपेन जो है वो जो है लॉन्च किया था, उसमें जो जिनकी जान गई थी उनकी मेमोरी में बनाया गया है। 1926 में इसको बनाया गया था। ओरिजिनल मेमोरियल जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इजरायली इजिप्शियन वॉर में 1967 में, और न्यू मेमोरियल जो है वो बनाया गया है 1980 में। और इंडियन ट्रूप्स ने जो है सुएज़ कनाल को जो है वो इजिप्ट के लिए सिक्योर करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। और बैटल ऑफ हाइफा जो इज़राइल की में बैटल हुई थी उस टाइम पर जो है वो इज़राइल नहीं था ऑफ कोर्स। और जो है जो ये पोर्ट ट्यूबिक जो जहाँ पर ये सिचुएटेड है उसको अब हम पोर्ट सुएज़ कहते हैं। सुएज़ पोर्ट जो है वो आपका नदर्न कोस्ट लाइन ऑफ गल्फ ऑफ सुएज़ में पड़ता है, और इसका जो है इस पोर्ट और इस सिटी का जो है वो सदर्न टर्मिनस सुएज़ कनाल में जो है आता है। और ये कई वेसल्स को सर्व करता है, कार्गो वेसल्स, ऑयल टैंकर्स और इवन कमर्शियल और प्राइवेट पैसेंजर वेसल्स ऑल्सो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली लार्सन एंड ट्यूब्रो और DRDO ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मॉड्यूल्स बनाने का कलवारी क्लास सबमरीन्स के लिए। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है कि आपकी जो सबमरीन्स हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ती है, ताकि बोट की बैटरी, जो सबमरीन की बैटरी जो है इलेक्ट्रिक मोटर जिससे पंप हो रही है, उसको चार्ज किया जा सके। अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है तो बहुत लंबे टाइम तक जो है वो सबमरीन को जो है वो पानी के अंदर रखा जा सकता है, क्योंकि वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा लगभग 10 मेगावाट की। और उसकी वजह से क्या होगा, जो है
3 मेगावाट तो टोटल आपकी कन्वेंशनल पावर प्लांट जो है जनरेट करता है, उसका 10% लगभग 0.3 मेगावाट के आसपास जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है AIP। जबकि जो न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोपल्शन सिस्टम है उसकी जो है स्ट्रेंथ वो लगभग 20 मेगावाट से ज़्यादा की होती है। अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है उसकी वजह से जो है सबमरीन्स पानी में ज़्यादा लंबे टाइम तक रह सकती हैं, क्योंकि उनको बार बार सरफेस पर नहीं आना पड़ेगा अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, नॉइज़ लेवल भी उनकी डिक्रीज़ हो जाती है। अब दो तरह की सबमरीन होती है, कन्वेंशनल जो या फिर जिसको आप डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स कहते हो, जिनको बार बार एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि डीजल जनरेटर चलाया जा सके, जिससे कि बैटरीज को चार्ज किया जा सके। और होती है न्यूक्लियर सबमरीन्स, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा पावर्ड होती है, और उनकी जो है एडवांटेज ये है कि उनको वो लंबे टाइम जो है वो सी के अंदर रह सकती हैं, और वो बिना जो है जो है सरफेस पे आए बहुत लंबे टाइम तक जो है वो पानी में रह सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, चिराल बोस लिक्विड स्टेट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक रीसेंट रिसर्च हुई है चिराल और कहा गया है कि चिराल बोस लिक्विड स्टेट एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर है। जनरली तो आपको पता होगा कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म्स में, लेकिन जब एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर आता है तो कुछ क्वांटम स्टेट्स में जो है मैटर ने डिफरेंट बिहेव किया, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट से डिफरेंट था वो। कैसे इसको ऑब्जर्व किया गया? रिसर्चर्स ने एक बाई लेयर सेमीकंडक्टिंग डिवाइस लगाया, जिसकी टॉप लेयर इलेक्ट्रॉनिक रिच थी, बॉटम लेयर जो है वो होल्स जो है वो उसमें उससे फिल की गई थी। ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस होल को ऑक्यूपाई कर सकते थे। अब ये देखा गया कि जो दो लेयर्स जब उनको बिल्कुल पास लाया गया तो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतने ज़्यादा स्पेस नहीं थी कि वो सारे होल्स को फिल कर सकें, और जिस जिस इलेक्ट्रॉन ने ऑफ कोर्स मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स को ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, कुछ होल जो है वो तैरते ही रहे ऊपर, और ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ये सिस्टम को यूज़ करते हुए, इस स्टेट ऑफ मैटर को यूज़ करते हुए आने वाले टाइम में डिजिटल इंक्रिप्शन सिस्टम्स को भी जो है वो क्रिएट किया जा सकेगा। ठीक है, अब चिराल क्या है? चिराल बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथ, और ये बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप को सुपर इम्पोज ना कर सके अपनी मिरर इमेज बनाने के लिए, उसको चिराल कहा जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, लैब ग्रोन मीट। ये भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो यूएस कंपनीज़ हैं जिनको कि यूएस FDA ने अप्रूवल दे दिया है सेल कल्टिवेटेड चिकन बनाने के लिए। सबसे पहली बार लैब ग्रोन मीट बनाने का अलाउ जो है सिंगापुर ने किया था साल 2020 में। अब कल्टिवेटेड मीट क्या होता है? जनरली जो सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, उनको जो जिससे कि ये मीट बनता है उसको जो है आइसोलेट किया जाता है और उनको एक सेटिंग में डाला जाता है बायोरिएक्टर में, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, राइट टेम्परेचर, ये सब सप्लाई उनको दी जाती है। जब ये सेल्स जो है बहुत बड़े हो जाते हैं, सफिशेंटली लार्ज हो जाते हैं, तो ये एक मास बन जाते हैं मिन्स्ड मीट का। उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर प्रोसेस करके उसको एक तरह से मीट के फॉर्म में पेश किया जाता है। अब कई तरह के ये सेल कल्टिवेटेड मीट होते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है इस टाइम पर ऑफ कोर्स चिकन है वो, और जो कंपनीज़ हैं उनको जो है चिकन जो है बनाने के लिए अलाउ भी कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ चिकन ही नहीं, पोर्क, सी ब्रास, ट्यूना, श्रिम्प, पोर्क या पोर्क किसी का भी जो है वो सेल कल्टिवेटेड वर्जन बनाए जा सकते हैं। और कहा जा रहा है कि जो मीट मार्केट है उसमें ये जो है लैब ग्रोन मीट एक ऑल्टरनेटिव देने से मार्केट और ज़्यादा ग्रो होगी। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? ऑफ कोर्स क्योंकि ग्लोबल लाइफ स्टॉक जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादा, 14.5%। और ये जो सेल कल्टिवेटेड मीट है, ये इवन जो है एनिमल मीट से भी ज़्यादा हेल्दी रह सकता है, क्योंकि इसमें कंट्रोल किया जा सकता है कि कितना फ़ैट रखना है। ठीक है, और जो है हेल्दी भी होगा, एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक होगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Gaganyaan mission. This topic is important for your science and tech section. So Indian astronauts who are training for the Gaganyaan mission, they will soon be traveling to the International Space Station on a joint India-US mission next year. So this will be India's first human spaceflight mission. So this space station, what is ISS? ISS is a large spacecraft. And scientists or astronauts can come on board and stay for weeks or months in microgravity situation, and this spacecraft
remains in low Earth orbit for extended periods of time, and it is an example of exemplary cooperation between five countries: US, Russia, Japan, Europe, and Canada. And it was launched in 1998. But in July 2022, it was announced by Russia that they will be pulling out of ISS after 2024 because they are building their own space station. So ISS has been operating since 1998, and it orbits the Earth at an altitude of 430 kilometers, and it circles the Earth in roughly about 93 minutes. So what is the Gaganyaan mission? Gaganyaan project was Gaganyaan project is a demonstration of human spaceflight capability by Indian crew members. Three of them would join an orbit of 400 kilometers for a 3-day mission. This is part of Indian human spaceflight program, which was initiated by ISRO in 2007. And GSLV Mk3 is the rocket that has been identified, which is of course India's heaviest rocket also, to take these humans to the low Earth orbit for the Gaganyaan mission. The space agency will also undertake 2 test vehicle missions to demonstrate the crew escape systems mid-flight, and even the retrieval of the crew module. There will be 2 more test vehicle missions to check that all systems which have been put for the unmanned flight are working fine, so that we can also use it later for second unmanned flight also. This mission was originally meant to be launched in 2022, in the 75th year of India's independence, but due to COVID, of course, it was pushed back, and now certain tests are remaining. If all goes well, then of course 2024 the mission could be launched, but if there is certain delay, then it could be pushed even as ahead as 2025. So the next topic is Wagner Group. This topic is important for your international relations. Russian President Vladimir Putin has recently said that an armed mutiny by a Wagner Group of mercenary force was treason, and Wagner Group's troops have taken control of Rostov-on-Don recently, and after negotiations with Moscow, they have left and they have now been moved to Belarus and even in Ukraine. So anyways, what is Rostov-on-Don? Rostov-on-Don is the largest city in southwestern Russia. It is also the Russian army's headquarters in that region. And Rostov-on-Don was occupied recently by Wagner Group mercenaries because they accused Russian troops of launching a rocket against them, and they claimed that Russian army officials lied to Putin about the reasons behind going to war against Russia. To Ukraine, against Ukraine. And uh, even Wagner Group also said that they are marching into Rostov in retaliation for the Russian army's attack against them. So this shows larger ramifications, because taking control of Rostov-on-Don, that is the headquarters of Russian army, basically shows how weak the Russian military is, and it is significant for Russia's. It is also significant for Russia's ability to wage its war in Ukraine, because many observers are saying that this could be a turning point in the war in Ukraine. What is Wagner Group of mercenaries? So they are also known as private military contractor Wagner, and it's a Russian paramilitary organization which was founded in 2014 by Prigozhin, who is the Russian veteran of the Chechen War. Uh, uh, the skull is the symbol of Wagner Group, and it was this organization came into attention in 2014 when they were fighting alongside Russian-backed separatists in Donbas region of Ukraine. Since then, they have been active across Africa, and they are thought to be about to 10,000 in number currently. Okay. So the next topic is Kedarnath temple. This topic is important for your art and culture section. Uttarakhand government has recently decided that they will be setting up a high-level committee to probe allegations of a 1.25 billion scam in gold plating the sanctum sanctorum of the Kedarnath temple. So what is Kedarnath temple? It is a Hindu temple dedicated to Shiva, and it is at a height of 34584 meters in Garhwal Himalayas near the Mandakini river. And it is said that Pandavas created this temple, and it was reconstructed later by Adi Shankaracharya in 8th century AD.
It has exquisite architecture which is built of extremely large and evenly shaped grey stone slabs. These stone slabs are interlocked with the use of iron clamps. No mortar has been used. Okay, it is part of the Chota Char Dham Yatra. Apart from Kedarnath, there is Yamunotri, Gangotri, and Badrinath Dham as part of this Char Dham Yatra. So it is also a part of Jyotirlingas. So there are 12 main Jyotirlingas in India where Shiva is worshipped in the form of Jyotirling, and these are this is the list of all the 12 Jyotirlings of India. Okay, so the next topic is National Family Health Survey. This topic is important for your social issues. So in response to criticism over exclusion of disability related questions in sixth round of National Family Health Survey 6, Union Health Ministry has said that there is no need to collect this data every 3 years because it will not change very fast, and the primary focus of NFHS is on maternal and child health. So the first time the questions on disability were included in NFHS 5, and the government is saying that there are different types of disabilities which have their own several medical terminologies, and the respondents were not even aware of the specific disabilities when the last survey was conducted. So that's why, of course, they are saying that the NSSO data would be sufficient for relying while making policies for the disabled people. Okay, but of course it is being criticized by the people that it shows lack of sensitivity of the government regarding this section of society. Anyways, what is National Family Health Survey? So it is conducted under the stewardship of Ministry of Health and Family Welfare, and International Institute for Population Sciences Mumbai has been given uh, the responsibility for conducting this survey, and the survey is conducted to collect reliable up-to-date information on fertility, family planning, mortality, and maternal health and child health. It is funded by USAID and UNICEF also. So this is the timeline or chronology of National Family Health Surveys, which have been conducted since 1992 period. So the next topic is Johar Rice. This topic is important for environment and economy topics both. Recently, scientists at Institute of Advanced Study in Science and Technology have explored the nutraceutical properties of aromatic Johar rice, which is an indigenous rice of Assam. And major Johar rice varieties include Gola Johar, Ketaki Johar, Bokul Johar, and Kunkuni Johar. They have several antioxidant, flavonoids, and phenolics properties. This rice is, of course, uh, geographical. It is enjoying the GI tag, and it has omega 6 and omega 3 fatty acids, and that's why it also prevents metabolic diseases like diabetes, cardiovascular diseases, and even cancer. So the next topic is Heliopolis Memorial. This topic is important for international relations. PM Modi has recently paid respects at Heliopolis Memorial at Port Tubik in Heliopolis War Cemetery in Cairo, that is in Egypt. It is part of the larger Heliopolis Commonwealth War Graves Cemetery, which has been built to commemorate the memory of 3727 Indian soldiers who died fighting in various campaigns in Egypt and Palestine in the First World War. It was unveiled in 1926 but was destroyed during the Israeli-Egyptian War of 1967, and this Port Tubik is now known as Port Suez, which is of course located in Egypt alongside the northern coastal line of the Gulf of Suez. This port and city marks the southern terminus of Suez Canal, and it serves vessels like general cargo, oil tankers, and even both commercial and private passenger vessels. So the next topic is air independent propulsion system. This topic is important for your security section. Recently, Larsen and Toubro and DRDO have entered into a contract for the realization of two air independent propulsion system modules for Kalvari class submarines of Indian Navy. So this air independent propulsion system is basically meant to find the problem of propulsion underwater, and
These systems are used to generate electricity so that the boat's batteries can be recharged, and AIP allows longer submergence than a conventionally propelled submarine, but uh, uh, the most efficient are the nuclear submarines propulsion systems, which can generate even 20 megawatt of electricity. So what are the features of AIP system? This allows the submarines to stay for longer hours in water, and because they do not need to come on the surface of water to charge their batteries. It also decreases the noise levels made by the submarines. There are two types of submarines: conventional or the diesel electric ones, and the nuclear submarines. The conventional ones need atmospheric oxygen to run the diesel generator, which will of course charge their batteries. But in nuclear submarines, the nuclear reactor is there, and that's why of course it allows performance advantage over conventional submarines. So the next topic is Chiral-Bose liquid state. This topic is important for your science and tech section. According to recent research, Chiral-Bose liquid state may be an entirely new state of matter, which this matter, you know that it exists generally in solid, liquid or gas forms, but at absolute zero form, the quantum states in quantum states, matter behaves very different, which is different from, of course, solid, liquid, and gaseous states. How it was formed? Researchers used a bi-layered semiconducting device. The top of the layer was electronic rich, the bottom layer was filled with holes, and when the two layers were brought extremely close together, electrons started occupying the holes, and those electrons who could not find enough holes to fill, and this created a new novel state, which was called the Chiral-Bose liquid state. In this state, electrons can be frozen into predictable patterns, and now it is being said that it can be used to fashion new digital encryption systems. So what is the meaning of Chiral? Chiral basically is the Greek word for hand, and it refers to anything which cannot be superimposed on its own mirror image. So the next topic is lab-grown meat. This topic is important for your science and tech environment section. Two US companies have been given the US FDA approval to make and sell their cell-cultivated chicken. US is not the first country to allow this. Singapore allowed it already in 2020. So what is this cultivated meat? So to make cell-cultivated meat, the stem cells are isolated, and they to make this meat, they are put in a setting which is also called the bioreactor, where where the resources like nutrients, fats, carbohydrates, amino acids, and the right temperature is given. And once these cells start becoming sufficiently large, they resemble a mass of minced meat, and they are then collected and processed for the specific purpose. So there are different types of cell cultivated meat, but chicken is the second most widely consumed meat in the world, and that's why this has been allowed. But of course, not just chicken, but sea bass, tuna, and shrimp can also be made from this cell cultivated meat. And what is the need of this cell cultivated meat? So the proponents are saying that global livestock is responsible for 14.5% of all anthropogenic greenhouse gas emissions. So some experts are also saying that lab-grown meat can also be customized to be made healthier, because you have the power to control this development of stem cells, and you can design it in a way that it contains less fat than the conventional meat. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.